Hello guys, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching my channel and you are here for the Dushyant's classes, online classes. Uh, you're from the 12th class or any other intermediate class from any board throughout the country and outside the country. We are now going to watch electrostatics. In electrostatics, we are going to study the charges and the different forces which are acting on these charges. Let's start. And today's topic is charges. So first of all, what are the charges? Charges क्या है? Actually, there is a history for the electrostatics, and electrostatics is one of the part of the field, electricity and magnetism. The certain history points that are related to the electrostatics are actually electrostatic is related to certain application. They are macroscopic and microscopic. कुछ macroscopic हैं, बड़े स्केल पे हैं, कुछ छोटे स्केल पे हैं. In the Chinese history, documents suggest that magnetism was observed as early as 2000 BC. जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का इम्पैक्ट है ये 2000 BC पहले से स्टडी होना शुरू हो गया था. बट अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन जो थे वो 700 BC में शुरू हुए. सो एक्सपेरिमेंट्स विद द एम्बर एंड मैग्नेटाइट दे आर रिलेटेड टू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. But 1600 में William Gilbert showed electrification effects were not confined to just amber. But 1600 में विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन के इम्पैक्ट्स हैं और इफेक्ट्स हैं they are not just confined to the amber. That also affect journal phenomena, other journal phenomena. Okay, and 1785 Charles Coulomb confirmed the inverse square law form of the electrostatic forces. और 1785 में कूलम ने सारे लॉज बता दिए जो कि किसकी फॉर्म में थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ की फॉर्म में थे. किसके लिए? फॉर द चार्जेस विच कन्फर्म द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस. इंटरेक्शन क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज द फोर्सेस कैन बी attractive, they can be repulsive. 1819 Hans Oersted found a compass needle deflected. 1819 में ओरिस्टन ने ऑब्जर्व किया कि कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आई है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. देन ही फाउंड व्हाट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट. एंड 1831 माइकल फैराडे ने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि जब मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं. किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर. वेरिएशन इन मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट and the production of current causes the deflection in the magnet. So ये interrelated field बन गया एक electromagnetism का. So 1873 में James Clerk Maxwell used observation and other experimental facts and formulate the laws of electromagnetism. From here he unified the electricity and magnetism. हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि physics is a science with a unified formation. Unified means it wants to combine the different phenomena to be described by the single phenomenon. बहुत सारे phenomenons को इकट्ठा करके हम single phenomena की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहते हैं. तो यहाँ पे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने वही यूनिफिकेशन का फिनोमिनन यहाँ पे प्रूव कर दिया, वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज कर दिया. 1888 में हर्ट्ज ने प्रोड्यूस कर दिया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय वेरीफाइंग द मैक्सवेल्स इक्वेशन. चलिए, what are the electrostatic charges and how many of they are? There are two kinds of charges called positive and negative. कौन कौन से हैं? Negative charges are the charges possessed by the electrons. जो charges electrons के हैं उन charges को क्या कहते हैं? कौन से charges है वो है negative charges. और positive charges कौन से हैं? जो कि possess होते हैं किससे? प्रोटॉन से. चार्जेस ऑफ द सेम साइन रिपेल ईच अदर. और प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस की? कि सेम जो चार्जेस है वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस है अट्रैक्ट करते हैं. इन अ सिंपल वे लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. यहां पे एक अच्छा सा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. देखिए, यू आर हैविंग टू रॉड्स, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. व्हेन द ग्लास रॉड इज मूव टुवर्ड्स द रबर रॉड they will attract each other because both are in opposite polarity. Then the next one, both are negative. रबर रबर की हैं, दोनों नेगेटिव हैं. देखिए, both are moving away from each other. The rubber rod is negatively charged. Second is also the two rods will repel. चल देखते हैं कुछ और इम्पैक्ट्स चार्जेस के. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड.
first most is the conservation of the charge. For example, charge is not created in the process of rubbing of two objects. कभी भी charge हम ये पढ़ते आए हैं कि whenever two objects are rubbed against each other, charges are produced. No, charges are not produced. Actually, rubbing में electrons एक body से दूसरी body में transfer हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ज डेवलप होता है, बट दैट इज नॉट द प्रोडक्शन, दैट इज जस्ट द इंडक्शन ऑफ चार्ज इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहां देखिए कंजर्वेशन को स्टडी करते हैं। ग्लास रॉड लिया आपने, यू हैव जस्ट रब्ड इट ऑन द सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ट्रांसफर हुए कहां से, फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क, and equal positive charge is left on the rod and your silk cloth becomes the negative. That is the conservation. Equal, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड दे आर इन पेयर्स, सो जितने चार्जेस आपके पास डेवलप होते हैं उसमें से आधे पॉजिटिव हैं, इतने ही नेगेटिव हैं, जितने पॉजिटिव हैं इतने नेगेटिव हैं, मतलब ओवरऑल इंपैक्ट कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इफ दे आर रिमूव्ड मींस इफ दे गेट एब्सेंट मींस equal number of positive and equal number of negative charges are absent. Now the next important property is quantization of charge. Quantization says the charge that does never develops in continuous number. They are always in packets, means 1, 2, 3, 4. Okay, they are not in points of 1, 1.5, 2.5, never, because the production of charge is due to the transfer of electrons. Okay, and the electrons will only be transferred from one body to another body in an integral number. So charge will always be in packets. So we represent, if Q is the charge, N is the number of electrons transferred, E is the electron charge of single electron, or charge on single electron, then Q is equal to plus minus Ne. So this is the quantization equation. So charge is always equal to the integral multiple of E. E is the charge on one electron, plus or minus, that depends whether the electron is removed or it is gained. Okay, and what is the value of charge on one electron? That is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. If the electrons are there, then it is negative E. If protons are there, then it is positive E. That was about the charges. Now what about the charges in conductor? Electric conductors are materials with some of the electrons are free electrons, जिनमें electrons क्या होते हैं, free electrons होते हैं। Free electrons are not bound. These electrons can move relatively free through the material, वो move करते रहते हैं। Example of good conductors are copper, aluminum, silver. When a good conductor is charged in small region, the charge readily distributes itself over the entire surface of material. But in insulator, electrons are charges not available. The available charges cannot move relatively freely comparable to the conductors. When a good insulator is charged in a small region, the charge is unable to move to the other one. In between these two types of materials, there is a third one, which is in between these two. Means the conductivity level, the insulation level is in between the insulator and conductor. They are more conductive than insulator and less conductive than semiconductor. The electric property of semiconductor is somewhere between those of insulators and conductors. Examples of semiconductor material include silicon and germanium. Now, how the charge is done with charging is done by the induction. Charging by induction require no contact with the object inducing the charge. इसमें रबिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको. Assume we start with a neutral metallic. हमने एक metallic sphere लिया. The sphere has the same number of positive. यहाँ ध्यान से देखिए आप, जितने number of positive charges है इतने ही उसमें negative charges है. A charged rubber is placed. अब मैं क्या करता हूँ, एक rubber ले आता हूँ जिसमें charge है. चार्ज मान लीजिए उसमें नेगेटिव है. देखिए जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आया तो इस सरफेस पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होने शुरू हो गए हैं. ये डेवलप नहीं हो रहे हैं, ये एक्चुअली उसी स्फीयर के पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको वो नेगेटिव जो उस रबर में है वो अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. एंड योर नेगेटिव दे आर मूविंग अवे ऑन द अदर सरफेस. अगर दूसरी सरफेस वाली साइड जिस तरफ वो नेगेटिव मूव कर रहे हैं, अगर उसे मैं अर्थ कर दूं, ग्राउंड कर दूं, कनेक्टेड विद अ वायर टू द अर्थ, ऑल द नेगेटिव विल मूव डाउन. ओके,
and at last there will be a positive charge and whole of the body will become positive. जैसे ही ग्राउंड वायर को मैं रिमूव करता हूं, there will be more positive charges. The charges are not uniformly distributed. This is called induction in the sphere. Now again, the rod is, अब हमने क्या कर दिया, उस रॉड को रिमूव कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो हमने कहां कर दिए थे, ग्राउंड कर दिए थे, चार्जेस ग्राउंड कर दिए थे, तो हमारा सफेयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज आ गया उस सफेयर के ऊपर। अब इंसुलेटर्स में देखते हैं कि हाउ इंसुलेटर हैज द चार्ज इनसाइड। A process similar to the induction is done here. Whenever the positive charge, देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाया है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के सारे इलेक्ट्रॉन्स वाली लेयर यहां लेयर क्रिएट कर लेंगे, तो इंसुलेटर की ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये उसकी अदर साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज द इंडक्शन ऑफ चार्ज इन द coil. Thank you very much. In this lecture we have gone through the charges in the and all the charges, they are at rest. That's why this field is called electrostatic. Static means rest, electro means charge. Thank you very much. Watch the channel, subscribe it. नेक्स्ट लेक्चर्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, ये पूरी सीरीज है, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आप इसे वॉच कर सकते हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, इसको बुक मार्क कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर and also press the like button that is down here, and subscribe and share this channel so that a wide range of students and the lovers of the physics can be there on the platform with us. We can have a great time to discuss the topics. Thank you very much. Have a nice time ahead. See you soon at my YouTube channel, Dr. Dushyant's Classroom for Learning Physics. Thank you very much. Have a nice time.